Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are exploring one of the most fascinating and important concepts in biology, which is ecosystem and how energy flows and ecological pyramids. Okay, so understanding how energy moves through nature is very important and crucial to understand how food chain and food webs work. So before proceeding towards the video, I just want to request, do please like, comment, share and subscribe to my channel. Okay, so let's proceed. So have you ever thought or have this thought, crossed your mind ever, like about how the energy from the sun helps a plant grow? And why sunlight? Why not, why not the artificial light? Why cannot artificial do it efficiently as the sunlight does? Have you ever thought about how the energy from the sun um, feeds a cow, right? Because plants grow होते हैं तो plants feed करते हैं cow को, तो indirectly sun is helping and eventually provides energy to humans. Sun also provides energy to humans like sunlight does. So on how this continuous movement of energy sustains every living organisms on earth. Have you ever wondered how these things happen, and that too in a collective manner, right? So in this video, we will understand how energy flows through ecosystems, the different trophic levels there are, the concept of the 10% energy law. I thought that most of us must be aware of 10% energy law. We are going to study that as well in detail, and how ecological pyramids explain the structure of life, right? So stay tuned till the end. Let's begin our journey and let's understand, nature's energy highway. So let's begin with what is an ecosystem. See, this is the basic and it's good to start with the basics. See, ecosystem, I would say it's a functional unit. Ecosystem is nothing but a functional unit of nature. हम जब ecosystem की बात करते हैं तो एक nature का functional unit है जो कि सारे living organisms के interaction पे focus करता है with each other and physical environment के साथ कैसे interact करेगा with any particular organism, how it is going to react with the environment, with the particular environment, with the particular weather, and how nature is going to deal with all of these and how the organisms are going to interact with one another. So all of these things are maintained within the ecosystem. Okay, now there are two components of the ecosystem, which are biotic and abiotic. So biotic components comprises all the living things like plants, animals, fungi and microorganisms too. On the other hand, if I talk about abiotic components, that are part of the ecosystem which comprises non-living things or factors, जैसे कि sunlight हुआ, temperature हुआ, soil है, water है, air है. So all of these factors are abiotic because they are non-living. ठीक है? So for example, हम अगर एक forest ecosystem की बात करते हैं, so forest is nothing but an ecosystem, right? It's a functional unit. So forest is an ecosystem. It includes trees, it includes birds, insects, animals, decomposers, sunlight, rainfall, soil nutrients. ठीक है, ये सब चीजें एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलती है. ऑन दी अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट पॉन्ड इकोसिस्टम में फिश, एल्गे, प्लैंकटन, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स, ये सब चीजें मिलती हैं. Dissolved oxygen तो is omnipotent. So every ecosystem, whether it's a forest, it's a desert or it's a pond, कोई भी स्कूल गार्डन भी हो, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, which is energy flows in, nutrients cycle around and life sustains its balance. ठीक है, this is how every kind of ecosystem going to work, be it any ecosystem. So this is a basic principle of how an ecosystem works. Now, energy in an ecosystem. We are saying energy flows, but what is energy in an ecosystem and how do we define that energy? See, energy is the lifeblood of every ecosystem. As blood flows in our body. So, उसी तरीके से एक lifeblood है energy हर ecosystem का. So, जितने भी energy पे हमको चाहिए होती है for our daily things or for our activities or for surviving as well, वो सारी की सारी energy एक ही source से आती है for every kind of organisms, and that is sun.
प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, बट दे ऑल्सो एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक देयर फूड। ठीक है, उनके लीव्स के थ्रू वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वंस फोटोसिंथेसिस इज डन, दैट्स हाउ दे मेक देयर फूड, दैट्स हाउ दे गेट देयर फूड। स्टोर्ड एनर्जी जो उनके अंदर होती है, वंस दे अक्वायर देयर एनर्जी, वॉट एवर दे नीड टू डू देयर एक्टिविटीज, वंस दैट इज डन, वो सारी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। अब जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, वो हर्बीवोर्स के लिए फूड होती है। हर्बीवोर्स प्लांट्स पे फीड करते हैं, एंड सो हर्बीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ओनली, लाइक दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो हर्बीवोर्स के लिए वो फूड कंटेंट होता है, दैट्स हाउ दे गेट देयर एनर्जी, यू नो। फिर उसके बाद हर्बीवोर्स जो होते हैं, दे बिकम फूड फॉर कार्निवोर्स। सो कार्निवोर्स आर एनिमल्स विच are dependent on animals, right? तो वो एनिमल्स पे सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स पे फीड करते हैं। सो दैट इज हाउ कार्निवर्स गेट देयर फूड। सो इन अदर वर्ड्स, इफ आई से sun provides energy to plants, plants provide energy to animals, and animals provides energy to other organisms, right? So energy moves through the entire web of life in a continuous chain, and that's how everybody gets their food. Now, components of energy flow. सो एनर्जी, जो एनर्जी फ्लो होता है एक इकोसिस्टम का, वो बेटर अगर आपको समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय डिवाइडिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 कैटेगरीज, एंड द 3 कैटेगरीज आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या होता है, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो भी फूड बनाते हैं, यू नो, एट दी स्टार्टिंग एट दी प्राइमरी लेवल, उसको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एंड दीज आर ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गे, जो सोलर एनर्जी, सनलाइट को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में फूड कन्वर्ट करते हैं, एक ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विच इज यूजेबल बाय प्लांट्स, विच इज यूजेबल बाय एल्गे, राइट। कंज्यूमर्स क्या होता है, कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, जो प्लांट पे फीड करते हैं, जो प्लांट्स पे या एनिमल्स पे फीड करते हैं। दैट्स हाउ दे, वो फर्स्ट जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ईट प्लांट्स। हर्बीवोर्स, जैसे हर्बीवोर्स की बात करें तो दे ईट प्लांट्स, कार्निवोर्स की बात करें तो दे ईट अदर एनिमल्स, ओमनीवोर्स की बात करें तो दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दैट्स हाउ कंज्यूमर्स आर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, वो नेचर्स रिसाइकलर्स होते हैं। नेचर्स रिसाइकलर मतलब जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो दे ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, इफ दे आर डेड, तो उनका जो डेड एंड डिकम्पोज्ड पार्ट होता है, विच इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड बाय एनी, यू नो, पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल, वो फिर उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं डिकम्पोजर्स, और वो न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल के अंदर फीड हो जाते हैं, सॉइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ प्लांट्स अगेन गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। इस तरीके से ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूस चलती है। डिकम्पोजर्स के बिना डेड मटेरियल जो है वो पाइल अप होता जाएगा, बिकॉज कोई डिकम्पोज करेगा नहीं तो वो डेड मटेरियल पाइल अप होगा, डेफिनेटली एक्यूमुलेट होगा, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो कभी भी इकोसिस्टम में वापस नहीं जाएंगे, एंड वन डे इट विल वैनिश, राइट। बिकॉज ऑफ दिस साइकिल, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग of nutrients, of everything, that's how we get our continuous food, right? Or every kind of organism get their continuous food. So energy flow and nutrient cycling are closely connected and very crucial. One cannot happen without the other. Now, अब हम समझेंगे फूड चेन के बारे में. What is food chain? सो फूड चेन एक सिंपल स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस होता है एनर्जी ट्रांसफर का, फ्रॉम वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अदर. ये रिप्रेजेंट करता है ऑफ हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, कौन किससे एनर्जी लेता है इकोसिस्टम के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, राइट. ग्रास वुड बी कंज्यूम्ड बाय herbivores, grasshopper consumes grass, right. उसके बाद हम ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम करता है, सो फ्रॉग, दैट्स अ कार्निवोर. सो फ्रॉग कंज्यूम करता है ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर इज कंज्यूम्ड बाय फ्रॉग्स, दैट्स अ कार्निवोर. फिर उसके बाद हम फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है ये समझें तो स्नेक कंज्यूम्स फ्रॉग, स्नेक इज अ टॉप कार्निवोर. एंड हु कंज्यूम्स स्नेक इज कंज्यूम्ड बाय ईगल, apex predator. So eagle consumes snake. So that's how
the energy flows from grass to eagle, right? It's a continuous cycle, it's a continuous connected chain. सो हर स्टेप जो चेन में रिप्रेजेंट करता है वो एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और जो एनर्जी है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर होती जाती है. सो दैट इज हाउ फूड चेन वर्क्स. लेकिन you have to remember one point, that nature is really this simple. अगर हम रियलिटी देखें तो ऑर्गेनिजम्स के पास मल्टीपल फूड सोर्सेज हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अब मैं इफ आई हैव सेड दैट फ्रॉग कैन ओनली ईट ग्रास होपर तो फ्रॉग विल ओनली ईट ग्रास होपर, और ईगल विल ओनली. ऐसा नहीं है. ऑर्गेनिजम्स के पास मल्टीपल फूड सोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल प्रेडेटर्स हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के. दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेब्स कम्स इन, राइट? फूड वेब्स इज ऑल्सो अ थिंग. सो वी विल अंडरस्टैंड फूड वेब नाउ. फूड वेब क्या होता है? बहुत सारी फूड चेन्स को जब आप इंटरकनेक्ट करते हो ना इन एन इकोसिस्टम, दैट्स हाउ फूड वेब फॉर्म्स. एक वेब इज लाइक अ प्रॉपर इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर अ डियर माइट ईट ग्रास एंड लीव्स, राइट? दोनों चीजें वो खा सकता है. But a tiger might hunt both deer and wild boar, right? So that is how. Now, हम जब इस फूड वेब को बनाएंगे, we will be include grass and leaves फॉरेस्ट के अंदर, एंड डियर, और फिर डियर को हम कनेक्ट करेंगे विथ टाइगर, वाइल्ड बोर को हम कनेक्ट करेंगे विथ टाइगर. सो ऑल ऑफ दीज चेन्स आर इंटरकनेक्टेड इन वन फॉर्म ऑफ द अदर, एंड ऑल ऑफ दीज चेन्स आर टुगेदर मेक्स फूड वेब. सो ये इंटरकनेक्शन है अलग अलग फीडिंग रिलेशनशिप्स का, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम को. नाउ हाउ स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड, यू मस्ट बी गेटिंग दिस क्वेश्चन. सी, एक स्पीशीज अगर डिसअपियर हो जाए, बिकॉज स्पीशीज कैन डिसअपियर, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ सकती हैं, इट कैन डिसअपियर, so other can still survive because they have alternate food sources. So that's how stability is provided. So that's why the food web is considered more realistic than a simple food chain, because food chain is I would not say that it's unrealistic, but then it's not possible also, at one end, because if certain ABC carnivore is not getting like small level, other small level XYZ carnivore, if it is not getting that particular organism, so will it not eat that day? So इसीलिए multiple food sources का होना is realistic and it's feasible also. So what are trophic levels now? See, हम food chain जब समझते हैं तो हर step food chain के अंदर एक trophic level होता है. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स का होता है, जहां पर प्रोड्यूसर्स फीड खाना प्रोड्यूस करते हैं, दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम वॉट एवर दे हैव प्रोड्यूस, जहां पे प्लांट्स और एल्गे आते हैं. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं. थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, जो कि स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं. फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है टर्शियरी कंज्यूमर्स का, जो कि टॉप प्रेडेटर्स होते हैं. So that's how आप उसके साथ आगे बढ़ते जा सकते हैं. Now every food chain is different. Some are small, some are very big, some are complex as well. So it depends on food chains, on who and who is included in the food chain. It depends all of that factors. लेकिन इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, एंड एट एवरी लेवल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, लेकिन amount of energy जो है it keeps decreasing as we move upward. So the trophic levels cannot be unlimited for a food chain, because जो energy का amount है as we move upward from 1 to 2, 2 to 3 trophic levels, जो energy का amount है वो decrease होते जाता है. Now at what percentage the amount is going to decrease, that is going to be our discussion for the next slide. But जो amount है वो decrease होता जाता है, and that's why the energy, the food trophic levels cannot be unlimited for a food chain. Now, the 10% law of energy transfer. So, in the previous slide we have discussed the amount of energy decreases when we go upwards in the food chain. So now, see, एक बहुत important principle है ये इकोलॉजी का, 10% law जिसे बोलते हैं, which was proposed by Raymond Lindemann. So
इस लॉ के हिसाब से ये समझ में आता है, एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट कि जब एनर्जी पास होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, only about 10% of the total energy is transferred, because understand it like that, one organism is eating another organism. Now वो जो एक ऑर्गेनिज्म है, इफ प्रोड्यूसर्स की हम बात करें, दे हैव मेड 100% फूड, 50% या 80% तो वो खुद कंज्यूम करेंगे, 20% विल बी ट्रांसफर्ड, राइट, या 90% विल बी कंज्यूम्ड बाय देम, 10% विल बी ट्रांसफर्ड. अब जो उसने फूड लिया, दैट 10% इज 100% फॉर दैट हर्बीवोर. हर्बीवोर में उस 10% का 90% विल बी कंज्यूम्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड 10% विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट कार्निवोर. फिर वो कार्निवोर के लिए वो जो 10% है, दैट इज 100% फॉर दैट कार्निवोर. उस कार्निवोर को 10% में, मतलब 90% will be consumed by that carnivore and 10% will be transferred. So that is how energy is transferred. It keeps on decreasing as we move upward, and साइमल्टेनियसली 10% ही जो है हर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है. सो जो 90% है, इट इज लॉस्ट एज हीट, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की जगह कुछ एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए. और डेली एक्टिविटीज कैन बी रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट. So let's take an example and understand it like that. अगर कोई green plant है, and if that green plant has captured 10,000 joules of energy. So energy's unit is joules. Joules energy उसने sunlight से capture की. अब उसमें से 1000 joules जो है वो herbivores के लिए available रहेगी. 10% of 10,000 is 1000. 1000 joules जो है herbivores के लिए available रहेगी. हर्बीवोर्स के बाद जो स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं उनके लिए 100 जूल्स अवेलेबल है. अब उस 100 जूल्स का 10% इज 10 जूल्स, तो 10 जूल्स टॉप प्रेडेटर्स के लिए अवेलेबल है. So that's explain why there are far fewer top predators in nature. There are very few top predators अगर आप स्टडी करोगे in detail, because not enough energy reaches to them. So that is how this works. Now direction of energy flow. See, जो एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन होता है, व्हाट इज दैट डायरेक्शन? एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन. नाउ व्हाट इज दैट डायरेक्शन? सन से हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर्स को मिलती है, प्रोड्यूसर्स से हमेशा कंज्यूमर्स को मिलती है, कंज्यूमर्स से हमेशा डिकम्पोजर्स को मिलती है, और फाइनली वो डिकम्पोजर्स से एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है एज हीट इनटू द, इट रिलीजेस इनटू द एनवायरमेंट, और वापस से फिर वो सेम साइकिल स्टार्ट होती है, फिर वो प्लांट्स को मिलती है, एंड दैट सेम साइकिल goes on. So this is how this works, and energy flow is unidirectional, and it is going to be unidirectional forever. So unlike nutrients, energy does not recycle. Energy कभी recycle नहीं होती है. Once it is used up and lost as heat, it cannot be reused. तो वो वापस से generate होगी, it cannot be reused, right? So that is why ecosystems constantly depends on the sun's energy to function. That's why if हम plant को 50 days के लिए sun में रख रहे हैं, but if वो 52nd day आपने उसको हटा दिया sunlight से, तो it is going to die. So that's the principle of the ecosystem. Without sunlight, the entire web of life would collapse. So sunlight is very important. Now ecological pyramids. See, ecological pyramids, to make it easier to visualize किस तरीके से एनर्जी, बायोमास, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेरी करते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के थ्रू हम ये समझ सकते हैं. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड वेरी इजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एनर्जी फ्लोज. ये जो पिरामिड्स हैं, ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में हर ट्रॉफिक लेवल पे. 3 तरीके के पिरामिड्स हो सकते हैं. नंबर्स का पिरामिड हो सकता है, बायोमास का पिरामिड हो सकता है, एनर्जी का पिरामिड हो सकता है. हर पिरामिड हमको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है इकोसिस्टम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है उस चीज का. ठीक है. सो वी विल स्टडी ईच काइंड ऑफ पिरामिड्स वन बाय वन. पिरामिड ऑफ नंबर्स. पिरामिड ऑफ नंबर्स मतलब क्या होता है? सी, पिरामिड ऑफ नंबर्स हमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का नंबर बताता है हर ट्रॉफिक लेवल पे. फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स, लाइक नंबर, जब आपको कोई भी पिरामिड नंबर बता रहा है ऑर्गेनिजम्स का, एंड हमने प्रीवियस स्लाइड में ये चीज समझी कि जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं बहुत फ्यू होते हैं, राइट?
तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पिरामिड होगा इट इज गोइंग टू बी अपराइट, ऊपर से इट विल बी ब्रॉड एंड नीचे आते आते इट विल बी उसका जो पॉइंट है वो बहुत ही छोटा होता जाएगा जैसे जैसे नीचे आएंगे। तो मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर्स ज़्यादा है, डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स ज़्यादा है देन द कंज्यूमर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट इन अ ग्रासलैंड, बहुत देर आर मैनी ग्रासेस which support fewer herbivores like rabbits, which support even fewer predators like snakes and hawks. However, in certain ecosystems it can be inverted. जैसे कि हम tree ecosystem की बात करें तो एक large tree can support hundreds of birds and hundreds of birds can turn thousands of parasites. So in certain ecosystem it can be inverted, but usually it is upright only. So the pyramid of number can vary depending on the ecosystem type. Okay. Moving forward to pyramid of biomass. बायोमास का जो पिरामिड होता है वो एक्चुअली हमें ड्राई वेट दिखाता है, ड्राई वेट और टोटल लिविंग मटेरियल ऑर्गेनिज्म का हर ट्रॉफिक लेवल पे। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात करें तो वो अपराइट होगा, बिकॉज जो टोटल बायोमास है प्रोड्यूसर्स का, प्लांट्स का, वो डेफिनेटली ज़्यादा है। जो ड्राई वेट है प्लांट्स का या ग्रासेस का जो ड्राई वेट है वो ज़्यादा है देन हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स। लेकिन हम इकोसिस्टम से, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर मोर, इसीलिए उनका बायोमास ज़्यादा है। बट इफ वी टॉक इन द इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, सो ये इन्वर्टेड होता है, मेनली इन्वर्टेड होता है। बाय बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वाटिक सिस्टम में, फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्लांट्स जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में ग्रो करते हैं इजीली। सो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और उनमें बहुत ही लिटिल बायोमास होता है एट एनी गिवन मोमेंट, but they reproduce rapidly and support a larger biomass of zooplankton and fishes. So that is why the pyramid is inverted. So this shows that biomass does not always mean energy. Turnover rate and productivity also matter. ठीक है, तो हम जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में समझा, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर लेस और फिर वो लार्जर बायोमास जू प्लैंक्टन और फिशेस ज़्यादा होते हैं अगर आप एक एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को समझो। तो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी समझाता है हर ट्रॉफिक लेवल पे ओवर टाइम। सो ये तो हमेशा ही अपराइट रहने वाला है, बिकॉज जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ट्रॉफिक लेवल्स में। सो इट इज ऑलवेज अपराइट क्योंकि एनर्जी जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते डिक्रीज होती है एज इट मूव्स अप द फूड चेन। सो ईच पिरामिड्स फॉलो द 10% लॉ, सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। सो ये जो पिरामिड होता है इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनिंग, क्योंकि एनर्जी बायोमास और नंबर की तरह कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती है। Now what is the importance of energy flow? सी एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम का फाउंडेशन है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। हमें उससे समझ में आता है कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो बायोस्फीयर में एंटर करती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, हाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हर स्टेप पे, कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है हर स्टेप पे, हर स्टेज पे। So ये जो knowledge है it helps ecologists predict how ecosystem respond to changes, human interference, species loss and एनर्जी फ्लो के अंदर अगर डिस्ट्रप्शन हो जाए या डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से या ओवरफिशिंग की वजह से, इट कैन कोलैप्स फूड वेब्स and threaten biodiversity. Okay, so it is that important. So maintaining the balance of energy flow is essential for life on Earth. So yeah, that's the end of the today's detailed video on ecosystem energy flow and ecological pyramids. We learned how energy from the sun moves through producers, consumers and decomposers, and how this flow is represented using different ecological pyramids. So if you found this explanation helpful, please give this video a big thumbs up, comment your favorite concept below, and don't forget to subscribe to my channel for more biologic topics explained in an easy, visual and fun way. And if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comments section. We will meet in the next video. Till then, bye bye, take care. Thank you.